हमारा अगला टॉपिक है इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन। फिगर 18.11 shows the inward radial flow turbine, in which case the water from the casing enters the stationary guiding wheel. The guiding wheel consists of guide vanes which direct the water into the runner, which consists of moving vanes. The water flows over the moving vanes in the inward radial flow direction and is discharged at the inner diameter of the runner. The outer diameter of the runner is the inlet and the inner diameter is the outlet. Velocity triangles and the work done by water on the runner. In chapter 17, we have discussed in detail the force exerted by water on the radial curved vanes fixed on a V. From the force exerted on the vanes, the work done by water, the horsepower given by water to the vanes, and the efficiency of the vanes can be obtained. Also, we have drawn the velocity triangle at inlet and outlet of the moving radial vanes. From the velocity triangle, the work done by the water on the runners, horsepower, and efficiency of the turbine can be obtained. इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में वाटर जो है वो केसिंग में एंटर करता है स्टेशनरी गाइडिंग व्हील के द्वारा। ये जो गाइडिंग व्हील होता है इसमें गाइडिंग वेन्स होते हैं जो पानी को डायरेक्ट करता है अंदर के रनर के मूविंग वेन्स के ऊपर। जो पानी है वो फ्लो ओवर करता है इनवर्ड रेडियल डायरेक्शन में, और जो डिस्चार्ज होता है वो इनर डायमीटर ऑफ द रनर पे होता है। तो आउटर डायमीटर ऑफ द रनर जो है वो इनलेट हो जाता है और इनर डायमीटर जो है वो आउटलेट बन जाता है। अगला टॉपिक यहाँ है वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ वर्क डन बाय वाटर ऑन रनर। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि कैसे फोर्स एग्जर्ट करता है वाटर रेडियल कर्व वेन्स पे जब वो फिक्स होता है व्हील पे। तो जो हम लोग फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वेन्स निकाले थे और वर्क डन बाय द वाटर जो था, और जो हॉर्स पावर निकाले थे वाटर का जो वेन्स पे लगता है। उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल भी बनाए थे जो कि इनलेट और आउटलेट दोनों पे बनता है। फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रायंगल, work done by the water on the runner, horsepower and efficiency of the turbine can be obtained. यहाँ पे हम लोग इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन का फिगर देख सकते हैं। ये हमारा गाइडिंग वेन्स है और D1 और D2 हमारा इनर डायमीटर है। ये हमारा अंदरूनी मूविंग वेन है। ये हमारा रनर हो गया और ये आउटर जो है ये हमारा गाइडिंग वेन्स है। तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑफ द रनर बाय द वाटर इज गिवन बाय PQ VW U1 plus minus VW2 U2. The equation represents the energy transfer per second to the runner. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इनर डायमीटर का वैल्यू मिल गया। D1 हमारा आउटर डायमीटर और D2 हमारा इनर डायमीटर हो गया। N हमारा हो गया स्पीड ऑफ टरबाइन RPM में। तो वर्क डन जब हम निकालते हैं तो आता है 1/G VW1 U1 plus minus VW2 U2. The equation 18.19 represents the energy transfer per unit weight per second to the runner. The equation is known by Euler's equation of hydrodynamics machine. This is also known as fundamental equation of hydrodynamic machine. This equation was given by Swiss scientist L. Euler. तो यहाँ जो इक्वेशन है 18.19 वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट पर सेकंड जो कि रनर का है। इस इक्वेशन को हम लोग यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं जो कि हाइड्रोडायनेमिक्स मशीन का है। इसको फंडामेंटल इक्वेशन भी बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक मशीन का, और इस इक्वेशन को स्विस साइंटिस्ट एल यूलर ने दिया था। इफ इक्वेशन 18.19 positive sign is taken if angle beta is an acute angle, if beta is an obtuse angle, then negative sign is taken. If beta is 90 degree, then VW2 is equal to 0, and work done per second per unit weight of water striking per second become as 1/G VW1 U1. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 18.19 में पॉजिटिव साइन तब लेते हैं जब बीटा एक एक्यूट एंगल हो, नेगेटिव साइन तब लेते हैं जब बीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, और हम लोग बीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो VW2 का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट और वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड का फॉर्मूला हमें ये मिल गया। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड बाय NH is equal to RP by WP is equal to
जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 डिवाइडेड बाई GH। अगर डिस्चार्ज एट आउटलेट जो है, अगर VW2 का वैल्यू 0 है तो हमारा जो है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है वो हो जाएगा VW1U1 बाई GH। Degree of reaction is defined as the ratio of pressure energy change inside the runner to the total energy change inside the runner. It is represented by R. Hence, it can be written as change of pressure inside the runner by change of total energy inside the runner. The equation, which is fundamental of the hydrodynamic machine, represents the energy transfer per unit weight to the runner. This is also known as total energy change inside the runner per unit weight. Change of total energy per unit weight inside the runner is equal to 1 by G VW1U1 plus minus 2 VW2U2. HE is equal to change of total energy per unit weight inside the runner. So HE value we get 1 by G VW1U1 plus minus VW2U2. Now we'll find the values of VW1 U1 and VW2U2 by from the inlet and outlet velocity triangle. So we here get the formula for VW1 and VW1 minus U1. Squaring both sides we get these formulas, and by simplifying them we get the values of VW1U1 and VW2U2. Here we get it VW2U2. In above case of velocity triangle under consideration, the change of total energy per unit weight inside the runner is equal to this value. Substituting the VW1U1 and VW2U2 from equation 1 and 2 in equation 18.20d, we get change of total energy per unit weight inside the runner as H is equal to V1 minus V2 का स्क्वायर प्लस U1 माइनस U2 का स्क्वायर प्लस VR2 माइनस VR1 का स्क्वायर divided by 2G. The above equations consist of three terms. The first term represents change in kinetic energy of fluid per unit weight. Second term represents the change of energy per unit weight due to centrifugal action. The third term represents the change in static pressure energy per unit weight as per the Bernoulli equation applied to relative flow through runner passage by reducing the rotating system into stationary system. We know that the energy change due to a centrifugal action takes place in the form of the above equation consists of three terms. The first term represents the change in kinetic energy of fluid per unit weight, and the second term represents the change of energy per unit weight due to the centrifugal action. The third term represents the change in static pressure energy per unit weight as per the Bernoulli equation applied to the relative flow through runner passage by reducing the rotating system into stationary system. ये जो अपनी ऊपर का इक्वेशन हमने देखा ना, उसमें तीन टर्म होते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वेट, दूसरा हमारा होता है चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, और तीसरा टर्म जो होता है वो स्टैटिक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट होता है एज पर बर्नौली इक्वेशन जो अप्लाई होता है रिलेटिव फ्लो थ्रू रनर पैसेज के लिए, जो कि रिड्यूस करता है रोटेटिंग सिस्टम को स्टेशनरी सिस्टम। अब रोटेशनरी और स्टेशनरी सिस्टम आप जानते हैं, स्टेशनरी का मतलब स्थिर होता है। We know that the energy change due to the centrifugal action that takes place in the form of pressure energy. हम जानते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जो हो रहा है वो प्रेशर एनर्जी के कारण हो रहा है और उसके फॉर्म में हो रहा है। Hence, the last two terms in equation 18.20e represent the change in pressure energy inside the runner passage per unit weight. So, change in energy inside the runner per unit weight, the value we get is this. Now, equation 18.20c becomes a change of pressure energy inside the runner per unit weight by change of total energy inside the runner per unit weight, which will here become H is equal to the same equation we received upside, and we get here minus, there we got plus. Now from the equation we can write as R is equal to 1 minus V1 का square minus V2 का square by 2G He. Values of R for Pelton turbine and other actual reaction turbines are
So R here we get value as 0. For actual reaction turbine, beta angle is 90 degree. So when we calculate the value by the following process, we get the value 1 minus cot alpha by cot alpha minus cot theta. रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में यूज होने वाले कुछ टर्म्स का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो स्पीड रेशियो जो है वो डिफाइन होता है U1 बाई रूट 2 GH के फॉर्मूला से। हमारा अगला टर्म है फ्लो रेशियो। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट टू द वेलोसिटी गिवन is known as the flow ratio, which we get by formula Vf1 by root 2 GH. The discharge of turbine is calculated by pi d1 d1 into Vf1 is equal to pi d2 v2 into Vf2। यहाँ पर हमारा d1 जो है और d2 डायमीटर है, b1 हमारा विड्थ ऑफ रनर है, Vf1 जो है वेलोसिटी ऑफ इनलेट है, और सारा का जो सेकंड टर्म है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो आउटलेट पर होगा। अगर थिकनेस ऑफ वेन जो है वो अगर हम इसको कंसिडर करें तो एरिया ऑफ फ्लो जो होता है वो होगा पाई d1 माइनस एन इंटू टी। हमारा अगला टर्म है रेडियल डिस्चार्ज। दिस मीन्स द एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद द टेंजेंट ऑन द व्हील is 90 degree and the component of the world velocity is 0. Radial discharge at the outlet means beta equal to 90 and Vw2 is equal to 0, while the radial discharge at the outlet means alpha is equal to 90 degree and Vw1 is equal to 0. रेडियल डिस्चार्ज का यहाँ मतलब होता है एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद टेंजेंट ऑन द व्हील इज 90 डिग्री एंड द कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड वेलोसिटी यानी कि रोटेटिंग वेलोसिटी है वो 0 होगा। और रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट जो है वहाँ पर बीटा हम लोग 90 डिग्री लेते हैं और Vw2 0 होता है। तो रेडियल डिस्चार्ज एट आउटलेट हमारा अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और Vw1 बराबर 0 हो जाता है। इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द वेन्स देन वी हैव h minus v2 square by 2g is equal to 1 by g Vw1 u1 plus minus Vw2 u2। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन डील कर लेंगे। एन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर एज 1 मीटर एंड 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर इज कांस्टेंट एज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है पहला डिस्चार्ज थ्रू द रनर और दूसरा विड्थ ऑफ टर्बाइन एट आउटलेट if the inlet width is 200 mm. So we can see here we have the given values this way. So using the equation for discharge we will put the values. So we get here 0.9425 meter cube per second, and from here we calculate the width of turbine at a outlet. We have no sorry width of turbine at outlet we calculate it is 400 mm. Next question we have invert flow reaction turbine has external and internal diameter at 0.9 meter and 0.45 meter respectively. The turbine is running at the 200 rpm and width of turbine is at inlet of 200 mm. The velocity of flow through the runner is constant and is equal to 1.8 meter per second. The guide blades make an angle of 10 degree to the tangent of the wheel and the discharge at the outlet of the turbine is radial. Draw the inlet and the outlet velocity of triangle and determine. So we have many cases here. So we have the given values here, and here we calculate the tangential velocity of the wheel at inlet and outlet, which we get the value 9.424 and 4.712 by the given formula corresponding. So we have the absolute velocity value at inlet. So by the formula we get it at 10.365 meter per second. Velocity of rotating at inlet we get 10.207 meter per second. Relative velocity at inlet we get 1.963 meter per second. You can also use calculator and see if the values are correct or wrong. The runner blade angle means the angle between theta and phi. So here we get the value as 66 degree 29 minutes. For outlet velocity triangle we have 20 degree and 54.4 minutes, that is 54 minutes and 4 seconds. Width of runner at outlet we have that we have calculated earlier 400
millimeter, and mass of water flowing through the runner per second is 1017.8 kg per second. Head of inlet at turbine we get 9.97 meter. Power developed we get 97.9 kilowatt. Hydraulic efficiency is given by the equation we see here, and the value is 98.34%. सो फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है और आपको फॉर्मूलाज पता है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये फिगर शो करता है कि टरबाइन इन विच द वाटर केसिंग इंटर्स द स्टेशनरी गाइड व्हील। ये वाटर जो है वो स्टेशनरी गाइड व्हील पे डायरेक्ट लगता है, और ये जो गाइड व्हील है इसमें होता है वेन्स जो डायरेक्टली वाटर को इंटर कराता है रनर पे, जो कि स्टेशनरी गाइड व्हील के चारों तरफ होता है। द वाटर फ्लोज थ्रू द वेन्स ऑफ द रनर इन द आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन एंड इज डिस्चार्ज एट द आउटर डायमीटर ऑफ द रनर। तो पानी जो है वो रनर के आउटर रेडियल डायरेक्शन में छोड़ा जाता है और डिस्चार्ज जो है वो रनर के आउटर डायमीटर पे होता है, और इनर डायमीटर ऑफ रनर जो है वो इनलेट माना जाता है, आउटर डायमीटर जो है आउटलेट माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रनर का ये जो आउटर डायमीटर है ये आउटलेट कहलाएगा, और ये जो इनर डायमीटर है ये इनलेट कहलाएगा। आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि पानी जो है वो डायरेक्ट यहाँ गाइड व्हील के थ्रू मिल रहा है और रनर के साथ साथ रोटेट कर रहा है। The velocity triangle at inlet and outlet will be drawn by same procedure as adopted for inward flow turbine. The work done by the water on the runner per second, the horsepower developed, and hydraulic efficiency will be obtained from the velocity triangle. तो जैसा कि हम लोग इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन में देख चुके हैं, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे इनलेट और आउटलेट पे। द वर्क डन बाय वाटर रन, तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे वाटर पे, वाटर के थ्रू रनर पर सेकेंड, और फिर हॉर्स पावर जो डेवलप होगा है उससे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकलेगा, जो कि हम वेलोसिटी ट्रायंगल में निकाल से थ्रू निकालेंगे। इस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनलेट ऑफ रनर जो है वो इनलेट ऑफ डायमीटर ऑफ रनर से मैच कर रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एट इनलेट विल बी लेस देन द आउटलेट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं U1 इज लेस देन U2 और D1 जो है वो D2 से कम होगा।